Hello students, hope you all are healthy and welcome once again to my class. Now we'll continue with our chapter 4 of geography, that is major landforms. In this chapter we finished almost all the topic, only some facts and information and one passage based question is left, and we'll discuss the exercise of this chapter also. So let's continue with the facts and information left. So here is a fact and information after the topic working of wind, that is loess is dust particles deposited extensively and are porous in nature. लोस क्या है? ये एक तरह का डस्ट पार्टिकल है जो डिपॉजिट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है बिकॉज ऑफ द वर्किंग ऑफ विंड, एंड they are formed when the wind carrying the eroded rocks are obstructed by forest. Eroded rocks are obstructed by forest, building, etc. तो ये डिपॉजिट कब बनते हैं? जब जो विंड होती है अपने साथ eroded rocks को कैरी अवे करती है, उड़ा के ले जाती है, और बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, बिकॉज ऑफ सम हर्डल्स, किसी रुकावट की वजह से, जैसे कि रास्ते में कोई बिल्डिंग आ गई, कोई फॉरेस्ट आ गया, उसकी वजह से जब वो पार्टिकल्स इरोडेड रॉक्स वहीं पे डिपॉजिट होने लगते हैं तो क्या बनता है? लोस. चाइना इज़ द होस्ट टू अ वास्ट अमाउंट ऑफ लोस. नाउ पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस. अ ग्लेशियर्स आर कॉल्ड रिवर्स ऑफ आइस. ग्लेशियर्स को हम क्या कहते हैं? रिवर्स ऑफ आइस, बर्फ़ की नदियाँ. Like a river flows and falls in steep mountain making a waterfall, glaciers make ice falls. जैसे कि जो रिवर फ्लो हैं वो जब कहाँ से गिरती हैं? माउंटेन से. जब नदियाँ माउंटेन से नीचे आती हैं, गिरती हैं, तो वो क्या बनाती हैं? वाटरफॉल बनाती हैं. वैसे ही ग्लेशियर्स मेक आइस फॉल्स. ग्लेशियर्स क्या बनाते हैं? हिमनद क्या बनाते हैं? आइस फॉल्स. द बेड ऑफ ग्लेशियर्स गेट नैरो एंड डिसेंड्स रैपिडली कॉजिंग आइस फॉल लाइक अ वाटरफॉल. ऐसे ही ग्लेशियर्स जब नैरो हो जाते हैं तो वो तेज़ी से फॉल डाउन होते हैं, नीचे गिरते हैं, जैसे कि वाटरफॉल होता है. जैसे वाटर रिवर्स जो कि माउंटेन से नीचे गिरता है तो वाटरफॉल बनाता है, वैसे ही आइस फॉल्स होते हैं. One of the most dangerous ice fall in the खुम्बू आइस फॉल. तो ऐसा ही एक सबसे डेंजरस जो आइस फॉल है वो कौन सा है? खुम्बू आइस फॉल. इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टेरेन एंड इज़ लोकेटेड एट द नेपाली स्लोप्स ऑफ माउंट एवरेस्ट. Hikers have to cross through this terrain to complete Everest summit. It is considered the most difficult and dangerous terrain because of the continuously moving Khumbu Glacier that moves 3 to 4 feet each day. Hikers try to cross this terrain very early in the morning because of partial freezing of the ice. So what is the meaning of terrain? Terrain means पार्ट ऑफ लैंड, या फिर उसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? भूखंड. सो एवरी हाइकर, जो इतने भी पर्वतारोही होते हैं, उनको इसको पार करना पड़ता है, एंड विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस. नाउ विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. सो विल स्टार्ट विथ fill in the blanks. The first one is, when this weathering, erosion and deposition happen, it results in formation of different, so the answer is landforms. Next, a dash is a steep segment of a swiftly flowing river in hilly areas. So a rapid, R-A-P-I-D, rapid is a steep segment of swiftly flowing river in hilly areas. Third, because of deposition, the banks are raised high and are called natural. Answer is levees. Natural levees. A dash is a small lake of melted ice filled in their depressions. Answer is tarn. A tarn is a small lake of melted ice.
The wind transports large amount of rock materials and deposits it in large fields, making hills. These hills are called dash. So these hills are called hillocks. Write T if the statement is true and F if the statement is false. First one, the mushroom rocks are eroded from the bottom. Yes, that's true. Second, glaciers form V-shaped valleys. No, this one is false, because glaciers form U-shaped valleys, not V-shaped. Third, a lagoon is a trapped water body. That is also true. A lagoon is a trapped water body. Fourth, a delta is a joining of river in a large water body. False. An oxbow lake is a separated water body of a river. That's also true. Now take the correct answers. What is not an erosional feature of sea waves? So sea arch, sea cave, beach or stag. So which one is not an erosional feature? So the answer is beach, because beach is an depositional feature, not erosional. What is the depositional feature of a glacier? So the depositional feature of a glacier is moraine, which is called glacial moraine. Flood plains are very dash. So flood plains are very fertile. Flood plains क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, fertile. Sea caves are turned into dash. Sea caves are turned into stacks. Depositional work of wind is sand dunes. जो depositional work होता है wind का, वो क्या करता है? Sand dunes बनाता है. So here we finished our chapter. Now read the chapter properly and complete all your exercise, your short answers and long answers. I have given the answers of long questions in PDF, which you have to complete. Read the chapter properly and don't forget to give your attendance in the comment section. Write down your name, your class and your section. Now here we finished our topic. Hope you understood the topics properly. Thank you, class.